Okay, can you see my screen? So just write one thing. Just I want to cover right. Yesterday, yeah, I was doing some mistake in that the AND operator doesn't work. AND means it will take it separately. तो इसीलिए सब permit all हो रहा था, right? So this is the use case where we are saying that I have four endpoint, right, and I want to make one endpoint public and another endpoint is like it should have a generic authenticated, it should be just authenticated so every user can use it, and next two are dedicated to some roles, right? So suppose read, right, or endpoint was like accessible if you have the read access, read or authorities, right? And write is also that if you have a write authorities, then you can access this write endpoint, right? So you need to configure like this. You need to write http authorized request and matcher, right? So this is my and matcher, then has authority read, then dot and matcher has authority write. Getting background noise, dot and matcher authenticated, and rest all other requests should be permit all, right? So this is the place where you will give the request or using I think some pattern or any request, and actually this is the thing where you will write something that either has authority or it should be authenticated or it should be permit all, right? So this is the structure, right? If I run this program, right, it will work. But sometime when you will test it, you might face a problem with postman, because postman sometime what it does, it actually use the same session id. So how to test it that it is working fine or not? You can test it by using your browser in incognito mode, right? So I'll just show you. So let me, ठीक है? Let's do one thing. Let's open the browser in incognito mode. Okay. मेरा browser दिख रहा है, right? So I need to give, huh? Chrome found that. Oh, sorry. Okay. So first let's take a look that API slash v1 slash hello. Hello doesn't need any username password, right? So it is giving me the output hello from the Spring Security from anonymous user, right? Now let's see. Then you need to again close it. Again you need to open a new incognito. Right now I am want to test the write, and what is that? User 1 has the read access, user 2 has the write access, right? I have two user, yes or no? So write, if I place write, it will ask me the username password. You can see sign in with the username password. So I will intentionally give the wrong password. User 1 1 2 3 4 5. User 1 has the read access, not write access. If I sign in, it will give me forbidden 403. You are not accessible to read this page. Just a minute. Let me add. Right, sorry.
फजल मेरा स्क्रीन विजिबल है? या इट्स ओके, ठीक है। हमने ज़्यादा दूर कुछ किया नहीं, अभी जस्ट स्टार्टेड। ओके, so first of all, we are just doing that authorized thing, right? So I just, it was a syntax mistake what I was doing yesterday, so I'm doing now. Okay, so this is the thing, right? Which we need to do. I was using the and authorized request. No, that is not the part. Only you need to just give the, you need to start with the HTTP authorized request. After that, it will be like the criteria and the access, criteria, that who to whom you want to give the access. This is the endpoint I want to give the access to, has authority read. This is the endpoint I have to give the access to, has authority write. This is the endpoint I want that it should be authenticated only, and rest all other will be permit all. Okay, so these are the structure. Then we are going to test it. So using the incognito mode, we want to test it, because else it will cache the information. So if I go right, okay, it cached it. Can you see? If you try right, it will not ask you to log in because it cached it. But if I close this and again I open a new incognito window, and if I paste this, if I press right, oh sorry, what is happening? Wait, just a minute. It is getting cached every time. Let me take two other thing. Localhost 5000 API v1 read, right? I think it cached it again. Okay, okay. API v1. So it is asking me the password. Now I'll give the right password, user2 and 12345, right? If I use this, it will give me the result, right? Hello from Spring Security, right, from user2. Okay, then I'll close it. Again I'll use a new incognito. If it is having two windows, then it will, okay. If I try to do the access read with user2, which is having write access, it will not allow me. But if I close it, then I go the read access user 1 1 2 3 4 5. I'm getting the user. Okay, and if I try with the auth endpoint with anyone, user 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5, so it is giving me the auth.
ठीक है. All good. So I'll just paste it the whole class, so you can also do the code and test it. Copy paste notepad plus. ठीक है. So I think you can just note it, you can test it later also. Just you can copy this thing whatever we are doing. Okay. I think that you can do later also. So now with a fresh mind, let's do the things what we discussed yesterday, the new OTP based project. Okay. Okay. So one thing, right? So see, what I was, every time I'm repeating because somehow you need to grasp this flow. Okay. So you might initially feel that repeating every time flow or repeating multiple time, it might be, you know irritating, but I can give you the honest thing that if I repeat it every time, sometime in your back of the mind, you will you will able to remember it, right? So that's what we are going to repeat the same thing again, but just you guys will dictate me what I should do. Okay. So our purpose yesterday was simple, to create two component instead of one component to display everything. Our purpose is to create two component. One component will do the authentication. It will have three endpoint: user add, user auth, and OTP check, right? We have two tables: username password, username OTP, right? And there will be another component which is the resource OTP, where actual endpoint will store. And from here, right, we will use the actual authentication, and we will call this service for this type of functionalities. Okay. So let's first create this auth OTP sorry, auth OTP server. Sorry. Okay. Good to go. Okay. As usual, you can use your spring.io, or I need to use my initializer. Let's see what we are going to do. So what project name I was giving? I was giving Photon. Right. Artifact name is security. I'll just name it as a OTP server. OTP or server. I'll just give the short name is in SSOAS. Okay. And I'll use 8 in dependencies. As of now, let's do one thing. Let's only use Spring Web, and it has to be one database. So Spring Security, right? We need the JPA H2 databases. Okay. ठीक है, बनाते हैं general.
I'll copy that to my so it is appearing here Spring Security OTP auth server, but I need to add the module so that I can auth server. If I run this, okay, configure. Okay, let's see what we'll do. Right, I'll create all the packages first. So first of all, let me right click it, then new package. It's like first I'll write the config package, then we'll write service. There will be service, yes. There will be, sorry, there will be controller, right? Then there will be model, then there will be what is it? There will be model, so model service repository. Okay, okay. Let's start with the first. What you will write? You will write the model. There should be two model as of now. One is user, okay,
what if the other thing, private string username str. Password. So what I'll do, okay, let me create another model. Its name is user OTP. It will have a same two thing, private string username private string OTP. इसमें जो भी आपको करना है ऐड कर दो, generate getter setter, and you should have a no constructor. And you should have a auto generate constructor. You should have both. Here also generate first the constructor. Generate getter setter. I'm pinging this model class. You are able to see the this notepad. It is getting, just to make it refresh. It's visible. देखो एक बार रिफ्रेश करो. मैंने इधर से रिफ्रेश किया. Okay. One thing I just want to tell you, we are using JPA. So everyone know about JPA? Yes, no. Anjali, Snehal, Samres? No. Okay. So we will actually use your that little only, expertise, right? It will be very simple. But on a high level, I can tell you what JPA, what the problem with us, and what JPA
actually help us, right? So JP internally use Hibernate. Hibernate is a ORM tool, right? ORM means object relational mapping. Okay. And what it does, right? Whenever every table, right, will be an uh, Java object or Java class, right, in your application, right? So what Hibernate does, Hibernate just map with the your Java classes and with your tables. Okay. And what JPA does, JPA, gave you some contract or some interfaces to communicate, right, the state change or the creation, updation, right, delete and I think select, right, that that object from the table, right, to your application. So this is the simple understanding. This taking the simple understanding, that is the thing. So how you can make it right, available? So you need to write it at the rate entity. Okay. ये जावा persistence वाला entity है, दूसरा कोई entity मत लेना. And you need to write the table name. What is the table name? Okay. And I'll use the table name as user. ठीक है. And here for each and every table I need to give the ID. Sorry, means primary key. So that will be the ID, right? So I'm just giving username as ID. I'm not making it very complex. Username is simple ID, right? And username is the ID. Yes. बाप रे, समरेश थोड़ा म्यूट कर दो भाई. Sorry, this is the user OTP, right? So I'll just use user OTP. And if I go inside the user, I'll use entity and table. This is the name. I'll just give user, and this is my ID. ठीक है. ये हो गया मेरा दो मॉडल. ओके. इसका बैकएंड में मेरा टेबल बनना चाहिए. नो और कंस्ट्रक्टर इज देयर. अच्छा, इसमें यूजर में नहीं है. यस, करेक्ट. थैंक यू. मिस हो गया. जनरेट नो और कंस्ट्रक्टर. So it will ठीक है. Model sorted. Okay. So you can do you want me to paste this, or you can handle this? Just add the entity table and ID. Good, right? Or you want me to paste it? ठीक है. ठीक है, ऐड कर लो. Then we will go with sync.
Let me know one when you are done. Done. ठीक है. अभी हमको दो चीज़ों सॉर्ट करना है. वो है कि H2 डेटाबेस जो भी है, राइट. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है. पहले तो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में सारे डिटेल्स भरना पड़ता है, सो दैट वी विल नो कि हमारा H2 डेटाबेस कहाँ परसिस्ट हो रहा है, राइट. एंड वेयर वी हैव दिस इंफॉर्मेशन. यस, समवेयर आई नोटेड इट. यस. So I need to paste it here. So what it is, I explained it I think earlier. These are the Spring data source you need to give so that it can take the right data source. And if I give the initialize mode always, it will take your schema.sql or data and data.sql entry. It will run those SQL to do the initial entry of the table. So I'll just change this file name to OTP DB to distinguish between the other one. And what we need to do, we need to, okay, let me paste it. You can add this in your app. और उसके बाद जो करना पड़ेगा, हमको एक फाइल ऐड करना है जिसका नाम होगा schema dot cg schema dot sql. Okay, and the content of the file will be my two tables. One is like user and user OTP. So I just keep it somewhere. OTP tables is okay. Let me paste it here. These are my OTP tables. Okay, username, password, primary key username, user OTP, username, password. Yes, sorry, username code, right. I am using code here. There I am using OTP. प्रॉब्लम होगा. देखो इसको भी चेंज कर. कोड विल बी द राइट वर्ड, राइट. OTP से अच्छा कोड ही देते हैं.
टेबल नेम रहने दो यूज़र ओटीपी, बट फील्ड नेम कोड ही देते हैं, और लेट इट बी स्कीमा डॉट इसमें चेंज करते हैं, प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, दिस टू फाइल एडेड, कैन वी गो एट। ठीक है, अभी आते हैं रिपोजिटरी लेवल में। रिपोजिटरी में हाउ मच रिपोजिटरी आई नीड टू रिपोजिटरी। वन repository is the interface which actually Spring JP help us to give the repository so that we can access the actual object. Now for that Spring told that okay, आपको कुछ लिखना नहीं है, आप सिर्फ एक इंटरफेस डिफाइन कर दो, I'll handle it by myself. Okay, so I need to write one interface, and the first interface will be user repository. Okay, and it is saying कि आपको मेरा एक इंटरफेस है उसको आप एक्सटेंड कर लो, extend jpa repository, and in the generics you need to give what, your model name, that is the user, and what is your primary key, is it a integer or a string, it's a string. Okay, and what I'll do, I need a user, right? I need to sometime find the user using username. Okay, so what I will do, I will ask JP repository, right, to give me find by username. Okay, here I will give you, can pass the username. Okay, and I'm asking you, so the output might be, sometime it will be there, sometime you might that username is not present. So to handle the null, I am asking you, give me the optional of user. Okay, and here I'll just write, this is my repository. What, done, right? एक चीज, one thing I just want to explain you, someone might get confused कि हमने ये method लिखा, who is going to implement this method, because this is the interface. Anyone can explain who is going to implement this method? So how not necessary, मतलब someone has to implement, right? नहीं तो इसका कोई बॉडी नहीं है, वो कैसे यूजर नेम लेके आएगा? No. Exactly. So suppose how the JP repository does, if you go inside the JP repository, right, it is giving the, some implementation, like find all by ID, right, save all, save and plus, right, something like. But out of the box it support that if you give any write any method, find by username, or find by what is your column you are using, right, it will give the implementation of that method, and it will, how it will do, it will use the query, internal query, to find the object using your that column. Okay, so here we are giving find by username, as username is a column of user, it will give its implementation, so it will give the object.
what I want. Okay, this is the magic of JPA repository. Okay, you can also take, or you can also give use two column, find by username and password, right? It will also do that thing. So all the method, right, if find by then the column name, it will give the default implementation. You no need to do anything. ठीक है? This is the magic of JPA repository. Very good. अंजलि, स्नेहल, समझ में आया? अभी देते हैं यूजर OTP repository. Same thing, right? It should extend the JPA repository of what? User OTP, your model, and string. And here what I need to do, I need to give optional of user OTP find by username. And then you should write that repository. Okay, and copy this code, notepad, okay. This is my all these two repository. Okay, so what I am done, I set up the tables, I wrote the model, I have the repository. Okay, I'm always going to, I'm doing the process to go up. Okay, just you complete, then I just give me 1 minute. Done. चलो अभी लिखते हैं सर्विस में. ठीक है, सर्विस में फॉर एवरीवन there should be some implementation, there should be some implementation, sorry, there should be some interface, there should be some implementation, as you know, for the but I'll just go with simple. So I'll just write a class user service. Okay, class
it should be my @service. Okay. What it should give me? It should give me public. Okay. What should be the thing? Your three purposes: add user, yes or no? Public void auth user, public boolean check OTP. These are the three methods I need to implement, right? What should be the add user argument? Rel user, simple user will come. Okay. In case of auth user also it will come user. Right. And in a check OTP, what it will come? It will come user OTP. ठीक है? Add user. Let's write the add user. How can we? I can add the user. The user came. I need to add it to database. It is not like that I'm initially inserting the data into database. I want to expose one endpoint so that everyone, means at least the authorized person can, because this server will be assume the setting in a very secured location. This application, so my admin can have direct access to add the user. So how I will do? I need that user repository. Yes or no? So I need to auto add. What I will do? I will do the user repository here. So what I'm going to do? User repository dot add save user. Okay, all good. ठीक है. एक प्रॉब्लम है यार, पासवर्ड को तुम एनक्रिप्ट नहीं करोगे, सीधा पासवर्ड डाल दोगे यूजर का. करोगे ना, एनक्रिप्ट करोगे ना पासवर्ड को, ये सुनो. तो कहाँ कर रहे हो एनक्रिप्ट? एनक्रिप्ट तो नहीं कर रहे हो. So let's encrypt it. So for that encrypt, what we need? We need a password encoder. Yes or no? So हम क्या करेंगे? हम सिंपल एक वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास बनाएंगे जिसमें हम दोनों चीज़ करेंगे. Initially what we'll do, we will give the configuration, and what we'll do, we will write a bin, and my bin will be public password encoder. इसमें हम क्या पासवर्ड मैं बोला था, इसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है रिटर्न पासवर्ड एनकोडर है BC स्क्रिप्ट, जो बहुत ही सब लोग मानते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है. ठीक है.
न्यू डिस्क्रिप्टिव एनकोडर। ठीक है, तो मेरे पास अभी पासवर्ड एनकोडर एक हो गया। अभी मैं जब यूज़र को स्टोर करूँगा उसी पासवर्ड एनकोडर को मैं यहाँ लेके आऊँगा कि ऑटो ऐड पासवर्ड एनकोडर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। हो गया फुल, शांति है अभी। सही है कि नहीं, बोलो। तो करना चाहिए कि नहीं, पासवर्ड एनकोड करना चाहिए, राइट? वी नीड टू एनकोड द पासवर्ड। ऐसे हम प्लेन टेक्स्ट में कैसे रख सकते हैं? अभी ऑथ यूज़र का देखते हैं। ऑथ यूज़र का पर्पस क्या है? अंजलि बोलो, ऑथ यूज़र का पर्पस क्या है? उसके बाद नो, इट्स ए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद उसको एक ओटीपी भेजना है, राइट? तो अभी क्या है, तुम्हारे पास यूज़र आया, उसके यूज़र के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड उसने दिया है, राइट? सो नाउ व्हाट यू विल डू फर्स्ट, यू विल टेक द यूज़र, कि इस यूज़र का कोई एंट्री है कि नहीं, राइट? सो यू आर गेटिंग यूज़र, इसको देते हैं पार्सिस्टेड यूज़र। पार्सिस्टेड यूज़र मेरे को ढूंढना है, कैसे ढूंढना है? सो आई हैव द यूज़र रिपोजिटरी, right? Dot, I have give the find by username, I can give the username, user dot get username। ठीक है, देखता हूँ कि इसी जो आपने भेजा है उसका साथ कुछ है कि नहीं। अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे ऑप्शनल क्यों यूज़ किया। ऑप्शनल का फ़ायदा ये है कि अभी हो सकता है कि नहीं है, नहीं भी तो हो सकता है ना, तो आपका ये फटेगा नहीं, क्योंकि हम एक चेक लगा देंगे इफ अगर प्रेजेंट है तभी मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो आगे नहीं जाऊंगा। ओके, सही है, गुड, ठीक है। अभी मैं परसिस्टेड यूज़र इज़ प्रेजेंट, अगर यूज़र प्रेजेंट है तभी मैं क्या चेक लगाऊंगा, इफ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, इफ बोलो बोलो, परसिस्टेड पासवर्ड एनकोडर से मेरे को मैच करना है, पासवर्ड एनकोडर डॉट मैचेस, किसके साथ किसका मैच करना है, यूज़र का जो पासवर्ड है एंड जो परसिस्टेड यूज़र का पासवर्ड है। इफ प्रेजेंट, सो इफ प्रेजेंट में हमको ऑप्शनल मिला है, बट ऑप्शनल से अंदर का ऑब्जेक्ट मिलने के लिए यू नीड टू, इसका नाम चेंज करते हैं थोड़ा, इसका नाम ऑप्शनल यूजर करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो हम वहाँ से ऑब्जेक्ट को निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है।
dot get. It will give you the user that is the persisted user, एंड मैं यहाँ से persisted यूज़र का पासवर्ड गेट पासवर्ड कर सकता हूँ। अभी अगर सब कुछ सही रहा तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड द पासवर्ड। तो सुन लो, सेंड ओ टी पी, सॉरी सेंड ओ टी पी। अभी सेंड ओ टी पी करूँगा तो क्या होगा, मतलब else else what I should do, throw bad credential exception। अगर इधर कुछ होता है कि यूज़र है ही नहीं तो आई विल थ्रो यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अभी सेंड ओ टी पी में क्या करना है, सेंड ओ टी पी इसमें भाई ये तो बहुत ही चीज़ है कि इसमें ओ टी पी चाहिए, फिर हम क्या करना है। ठीक है, सेंड ओ टी पी यहाँ पर मैंने एक अलग मेथड लिखा है। सो मेथड में समझ लो कि हमको यहाँ पे हमको सिर्फ चाहिए यूज़र ही चाहिए, समझ लो। ठीक है, इसी यूज़र को सेंड ओ टी पी करना है। ठीक है, अभी सेंड ओ टी पी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड लिख सकता हूँ जो सिर्फ इसी के अंदर यूज़ कर सकता है। सो void send OTP। ओके, send OTP user। आई विल शेयर द कोड, टेंशन मत करें, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग एंड अंडरस्टैंड। सेंड OTP में क्या करना है बोलो, एनीवन हैज एनी आइडिया? थोड़ा एप्लीके मतलब प्रोग्रामर का दिमाग लगाओ कि हमको क्या करना है सेंड OTP में। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू गेट ए स्ट्रिंग, गेट ए 4 डिजिट कोड। OTP समझ लो कि 4 डिजिट कोड है, राइट? यस, एग्जैक्टली। लेट मी गिव ए गेट OTP, समझ लो गेट OTP करके एक और जेनरेट OTP, गेट OTP से जेनरेट OTP, रिटर्न OTP स्ट्रिंग। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, बहुत सारी चीज़ करने का है बट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। आई कैन टेक ए सिक्योर रैंडम नंबर। ठीक है, अभी सिक्योर रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंट दे सकता हूँ कि मेरे को इस नंबर बाउंड कर सकता हूँ। तो 4 डिजिट का है तो मैं 9000 बाउंड किया, तो 9000 के अंदर कोई नंबर आएगा, राइट? देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड 1000 टू, मतलब ये जस्ट एक रैंडम, यू कैन डू एनीथिंग, राइट? सो इट विल बी इंटीजर। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ
random written मेरा फर्स्ट काम होगा यहाँ से OTP करो टू फर्स्ट आई विल कॉल द जनरेट OTP मिल गया। अभी क्या करना है, अभी हमको OTP तो सेंड नहीं कर सकते तो डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। यस, यस और नो। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा स्टोर सीधा कैसे करेंगे। डेटाबेस में तो यूज़र नेम एंड OTP ये दोनों मिलके तो मतलब यूज़र नेम इज़ ए प्राइमरी की, तो अगर उस यूज़र को ऑलरेडी कोई OTP सेंड हुआ है तो क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। बोलो स्नेहल क्या करना है। तुमने एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया, तुमने एक बार ऑथेंटिकेशन दिया, तुमको एक OTP आया, ठीक है, विदाउट गिविंग द OTP यू आर अगेन ट्राइंग टू गिव द ऑथ, व्हाट यू विल डू। नहीं, तुमने ऑथ ऑथ कॉल किया, एज्यूम दैट ऑथ कॉल किया, ठीक है, कि ऑथराइजन करो, यूजर नेम पासवर्ड दिया तुमने, तुम्हारा मोबाइल नंबर पे OTP आया, तो बैकएंड का जो डेटाबेस है उधर भी OTP स्टोर होगा, तुम्हारा डेटाबेस मोबाइल पे है, उसके बाद तुमने OTP को दबा के नेक्स्ट स्टेप नहीं गया, तुमने फिर से ऑथ किया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विथ न्यू OTP, चलेगा ना, कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पुराना OTP से हम काम चला लेंगे, जितना भी है और तो पुराना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आइडियली इट शुड नॉट बी लाइक दैट वे, राइट। फॉर ए सिक्योर्ड सिस्टम इट शुड नॉट, सो व्हाट हाउ वुड आई नो कि उसका यूजर नेम मतलब OTP ऑलरेडी प्रेजेंट करता है, सो आई विल I need to get the user OTP repository, right। नहीं तो कहाँ से मिलेगा यूज़र OTP रिपोजिटरी, तो मेरे को OTP वाला टेबल को एक्सेस देगा। ये सुनो, सही है, मैंने इधर ऑटो ऐड कर लिया। अब मैं पहले देखूंगा कि यूज़र OTP रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम, जो यूज़र आया उस गेट यूज़र नेम में कोई ऑलरेडी OTP एंट्री है कि नहीं। अगर OTP एंट्री है तो ये मेरा कोई भेजेगा, इफ़ ऑप्शनल यूज़र OTP इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो मेरे को क्या करना है, आई नीड टू first of all get that user OTP, that is the persisted user OTP is equal to what, option user OTP dot get, ओके। ऑप्शनल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या, जस्ट सिंपल थिंग। ऑप्शनल क्या करता है, ऑप्शनल आपको एक रैपर बना देता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि उसमें कुछ डेटा है कि नहीं है। वहाँ से डेटा कैसे निकलना है, ऑप्शनल डॉट गेट, इट विल गेट द डेटा, सिंपल, सही है। अंजलि, अभी इसको क्या करना है, परसिस्टेड यूजर OTP मिल गया, अभी क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट कैसे करूँगा,
बोलो बोलो बोलो। इधर है। तो पहले परसिस्टेड यूज़र ओटीपी जो ऑब्जेक्ट आया, मेरे को एज एक यूज़र ओटीपी टेबल में परसिस्ट करना है, बट उसका ओटीपी को चेंज कर देना है, राइट। आई विल सेट द न्यू ओटीपी। तो यूज़र नेम सेम रहेगा, ओटीपी, राइट। उसके बाद हमको अपडेट करना है। अभी रिपोजिटरी लेवल पे अपडेट का मतलब क्या है, राइट। अपडेट का मतलब इस लाइक कि हम अपडेट करो, ये अपडेट इज़ ए क्वेरी लेवल चीज़ है, बट रिपोजिटरी लेवल पे जो चीज़ है, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सेव इट, राइट। यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव persisted यूजर ओटीपी, सॉरी, यूजर रिपोजिटरी, यूजर ओटीपी रिपोजिटरी, ठीक है। सेव में क्या होता है, जस्ट लिसन दिस वर्ड केयरफुली। सेव में दो चीज़ होता है। आप अगर जो ओटीपी पास करे हो, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट पास करे हो, उसका जो आईडी है, वो अगर डेटाबेस का कोई टेबल के साथ मैच करता है, सो इट विल डू द अपडेट। अगर डेटाबेस का कोई एंट्री के साथ मैच नहीं करता, इट विल डू द इंसर्ट। ओके, परफेक्ट। अगर नहीं मिलता है, कोई भी ओटीपी नहीं है, मतलब यूज़र का कोई फर्स्ट टाइम है, सो नो ऑप्शनल यूज़र ओटीपी इज प्रेजेंट, तो क्या करोगे? और सिंपल है, पहले एक यूज़र ओटीपी बनाओ। ओके, यूज़र ओटीपी इज इक्वल टू न्यू यूज़र ओटीपी। उस यूज़र ओटीपी उसमें क्या क्या डालोगे तुमने? ऑल आर का आर्गूमेंट दिया, सो यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, एंड जो आपका ओटीपी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया और मेरे को रिपोजिटरी में यूज़ करना है। डॉट सेव यूज़र ओटीपी, ठीक है। किसी का कोई शिकायत है? ऑथ हो गया तुम्हारा? अगर यूज़र नेम सही मिला, पासवर्ड सही मिला, तो आई विल सेंड द ओटीपी एंड दिस इज माई इम्प्लीमेंटेशन। ओके, गुड। ये बेसिक बेसिक कोडिंग है, मतलब थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस वॉट एवर यू डन, आई जस्ट इम्प्लीमेंटेड द सेम थिंग। इसमें तो कुछ ऐसा, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है नहीं, ठीक है ना। और एक मेथड है, इम्प्लीमेंट करना है, आगे बोलो। ठीक है, तो जाओ आगे। I'll share the code, right? Don't you get. हम्म, क्या बोलते हो? हम्म, हाँ, तो यूज़र ओटीपी तुम्हारे डेटाबेस में कुछ है नहीं, राइट। तो आई नीड टू गिव द यूज़र ओटीपी एंट्री, तो उसी के लिए मैंने एक दूसरा यूज़र ओटीपी ऑब्जेक्ट बनाया, जिसका यूज़र नेम होगा यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, जो यूज़र ओटीपी मांगने के लिए ऑथ के लिए आया है, और जो जनरेटेड ओटीपी है, उसको दोनों को ऑब्जेक्ट किया, फिर उसको परसिस्ट कर दिया। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू ऑथ कॉल, कैन सी दैट ओटीपी इज बीइंग जनरेटेड। अगर एग्जिस्टिंग है तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी इसको चेक ओटीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार, उसके बाद आई विल शेयर द कोड, यू टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड, देन विल कम बैक। ठीक है, चेक ओटीपी का पर्पस क्या है कि
यूज़र नेम OTP दिया है, मेरे को जस्ट बोलना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट आई विल, मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर रहेगा, सो आई विल गेट ए ऑप्शनल यूज़र OTP इज इक्वल टू यूज़र OTP रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम. यूज़र नेम को कहाँ से मिलेगा, यूज़र OTP डॉट गेट यूज़र. ठीक है, अभी मेरे पास ऑप्शनल यूज़र OTP आ गया. ठीक है, अगर या तो ये हो सकता है कि OTP है, मतलब पहले उसने ऑथ किया, या सीधा उसने ऐसे एक 4 डिजिट का रैंडम नंबर चला और फेंक दिया कि चलो दे दो मेरे को, हो सकता है, राइट. यूज़र कैन डू एनीथिंग. सो आई नीड टू फर्स्ट टेक ए लुक कि एक्चुअली ऑप्शनल यूज़र OTP is present or not. If it is present, then I'll check the OTP. What I'll do, I'll get the user OTP. अभी इसका नाम देते हैं persisted user OTP is equal to optional user OTP dot get. करेक्ट है. अभी ये मेरे को देखना है कि persisted user OTP और user OTP जो आया है वो मैच करता है कि नहीं. So I'll just take a look if the persisted user OTP equal get OTP equal जो यूज़र OTP आया है डॉट गेट OTP. अगर ये इक्वल्स होता है देन आई विल रिटर्न टू. अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फॉल्स. अगर यूज़र की एंट्री है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, अगेन फॉल्स. हो गया, मेरे सारे फंक्शनलिटीज़ इधर इम्प्लीमेंट कर दिया. अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ, जस्ट टेक ए लुक. And कॉपी कर लो यहाँ से, just and paste it in your own ID, then take a look. Okay, then we will complete the rest. सिंपल लॉजिक है, किसी को कहीं पे लगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया या को जो भी लॉजिक है, समरेश, इज इट रिलेटेबल? अंजलि, स्नेहल, राइट, गुड, राइट. कि कुछ कंफ्यूज. सिंपल है, सिंपल इफ एंड एल्स लॉजिक एंड रिपोजिटरी को जस्ट लिया ऑप्शनल. न्यू, ओनली न्यू concept is might be the optional, you might not have used the optional previously, but yes, that is the only thing, but it is just to राइट मेक श्योर दैट कोई आपका एप्लीकेशन में null pointer एक्सेप्शन ना आ जाए. क्योंकि अगर हम विदाउट ऑप्शनल, अगर हम सीधा समझ लो कि यहाँ पे यूज़र और persistent यूज़र गेट पासवर्ड करते हैं और यहाँ से persistent यूज़र नल देते, तो आपको null pointer एक्सेप्शन आ जाएगी. persistent यूज़र है ही नहीं, तुम उसका पासवर्ड मैच कर रहे हो, राइट. एंड उससे पहले भी अगर नल चेक करोगे
So that will also be a null pointer exception. So optional is the that thing that it will give you a very good handling. अभी छोड़ो. So I need to write one more thing, that is the final thing, controller. Then we'll test this application. Then we'll see what right will happen. And ठीक है. आप लोग बताओ जब आप you are ready. So I'll write the controller and few things. One more thing I need to take a look. Then we can, I think, test it. Just let me know whenever you are ready to go ahead. We're done. Exactly. Good. Basic script password, yes.
Okay. Okay, anyone else done? Ratul Samres. Chalo, great. Let's do the things next. Controller. ठीक है, कंट्रोल में हमको क्या करना है? Or we can write auth controller. ठीक है, auth controller. What I need to do, I need to write public. ठीक है, response entity. Sorry, ठीक है, अभी okay. So now I am just writing the auth controller. What will be my first method? That is the add user, right? User. What I'll do, auth controller should have auto add the service. Yes or no? User service. What I'll do, I got the user, so I'll do user service dot add user. ठीक है, चलो इसको हो गया, बट हमको कैसे ये चलेगा, मतलब so I need to write it, right? This is the REST controller and I need to write it. What is the request mapping? This is the standard thing. You can just write API v1 version 1, and this will be my, I need the object, so this will be my post mapping, right? This is my post mapping, and the mapping will be user slash add. Okay, and this I'm expecting in the request body. Okay, return response entity, sorry, new, अरे यार क्या हो रहा है, new response entity, and what the only status code I will send. My HTTP status code created 201. Okay, now same thing, will be public response entity auth user. मैं यूजर को auth करूँगा. Here also I will accept the request body as user. Okay, and just write user service dot auth user. अगर auth में कुछ आया, so I'll give it back. HTTP status. Okay,
ठीक है। पोस्ट मैपिंग में मैं क्या दूंगा, Ctrl+V user.auth public, it should be response entity boolean, it will be check OTP. What will be the request body? Request body will be here, the user OTP. And what I will do, user service dot check OTP. This is the user OTP, and it will be boolean OTP. It is a valid OTP indicator. उसके बाद return response entity आपका valid OTP indicator dot http status code. Okay, I'm going to add the new. बोलो, किसी का कोई आपत्ति है? सही है? Let me paste this code to Notepad. एक चीज सॉरी एक चीज छोड़ के सब हो गया, वो है कि कोई भी यूज नहीं कर पाएगा Spring security is there, right? So if you go the pom.xml, Spring security is there. तो Spring security by default सारे एंड पॉइंट को सिक्योर कर देगा, और यहाँ पे तो आपने ऑथेंटिकेशन में कुछ भी नहीं किया, राइट? दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम. So somehow you need to ask or you need to tell that okay, मैं तुमको स्प्रिंग सिक्योरिटी को बोलना पड़ेगा कि सॉरी वेब सिक्योरिटी परमिट ऑल, यस गुड, या कुछ तुमको देना पड़ेगा. सो मैं परमिट ऑल ही पहले बताता हूँ, नहीं तो वो सबको बंद कर देगा, राइट? ऑथराइज रिक्वेस्ट, any request, permit all. If you want to give any permission, okay, that is fine. फिर यूजर नेम, आपको यूजर नेम ऐड करना पड़ेगा. दैट यू कैन डू इट हियर, नॉट एन इशू, बट फॉर सिंप्लिसिटी यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट हाउ दिस सिक्योरिटी विल वर्क. सो मैं सबको परमिट ऑल करके रखता हूँ. टू मोर थिंग्स वी नीड टू डू. मैं एक बार प्रीवियसली बोला था, स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट सारे पोस्ट मेथड को एक्सेस नहीं करने देते हैं. ये वर्ड सुना सुना लग रहा है, CSRF. क्या है ये? अंजलि, तुम तो शायद इसको बहुत इंटरेक्ट कर चुके होगे. रिपोर्ट में आता नहीं है सिक्योरिटी? अजय नहीं, अंजलि नहीं, सॉरी, स्नेहल, यू माइट हर्ड दिस वर्ड, राइट?
request forging, yeah, cross site request forging. Any idea what is it? ठीक है, मैं बताऊंगा, कोई नहीं. अरे समरेश, you know this thing, right? CSRF attack. ठीक है, I'll explain, not an issue. यहाँ पे मैं दो चीज़ और दे रहा हूँ. सो बेसिकली CSRF इज ए वन टाइप ऑफ थिंग. उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ फ्रॉड हो सकता है आपको वेबसाइट में. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप CSRF डिसेबल करके रखते हो. मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोस्ट मेथड को डिसेबल कर देते. पोस्ट मेथड यू कैंट एक्सेस. तो आपको सिक्योरिटी को बोलना पड़ेगा कि आपका CSRF अपने तरफ से डिसेबल करके रखो. एंड ऑल्सो ये जो मैं देता हूँ ये इसलिए दिया कि H2 डेटाबेस को मैं देखना चाहता हूँ उसका टेबल्स, राइट, यूजिंग द कंसोल, राइट. तो इसीलिए हमको उसको फ्रेम ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्रेम में नहीं दिखाएगा. ओके, दिस इज द ऑन, दिस विल बी नॉट इन प्रोडक्शन. कभी भी ये नहीं जाएगा क्योंकि कभी भी प्रोडक्शन में H2 डेटाबेस यूज नहीं होगा. दिस इज ओनली फॉर द जस्ट H2 डेटाबेस. H2 डेटाबेस को मेरे को एक्सेस करके देखना है उसका टेबल में क्या कितना टेबल बना, क्या चीज़ है, राइट. फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस. ठीक है, अभी कंट्रोलर को कोड मैंने दे दिया. यस, सो एवरीथिंग, एवरीवन हैज दिस कोड. क्विकली टेस्ट कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है. हम 1.5 घंटा बोलते हैं, बस 2 घंटा हो ही जाता है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट. सो वी कैन जस्ट यस नो चलेगा. बंद कर दूँ क्या, बोलो. चलाते हैं इसको, चलेगा तो देखते हैं व्हाट इट डज, व्हाट हैपेंस, एवरीथिंग. लेट्स सी. एक प्रॉब्लम है, शायद सर्वर पोर्ट नहीं दिया तो 8080 पे रन होगा. लेट्स सी. ठीक है, दैट इज़ फाइन. ओके, ठीक है, कूल. अभी मेरे को H2 का पहले टेबल देखना है, टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं. टेबल को हम कैसे देख सकते हैं, सिंपल है, मैं बोला था लोकल होस्ट जहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम रन हो रहा है 8080 H2 कंसोल. ठीक है, it will redirect you to this page. Here you need to give the JDBC URL what we have used. ये शायद कुछ पुराना दिखा रहा है, सेव्ड होगा. ये OTP DB हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको यही URL यूज़ करना है. पासवर्ड कुछ नहीं है, यूज़र नेम है ऐसे. So if I use this, if I connect it, it will give me the console. यूज़र एक टेबल बन गया, यूज़र OTP टेबल बन गया, राइट. बट अभी भी कुछ भी नहीं है. मैं अगर इसको रन करता हूँ, नो रिकॉर्ड. मैं अगर इसको रन करता हूँ, नो रिकॉर्ड. ओके, ऑल गुड. ठीक है ना. एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा. 8080 API view1 पहले होगा यूज़र add. So this is a post method. Everything is a post method here. No authorization header. बॉडी में हम क्या भेजेंगे, जेसन भेजेंगे. तो जेसन को कैसे लिखना है, यूज़र नेम
मैं ऐड करना चाहता हूँ यूज़र 1, पासवर्ड मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5, बट इट शुड बी स्टोर्ड विथ ए एनक्रिप्टेड फॉर्मेट जो मेरा कोड के अंदर है। तो मैं यूज़र जब ऐड करूँगा तब आई विल गिव द रॉ पासवर्ड, बट इट शुड बी यू नो सेव एज द एनक्रिप्टेड वन। ओके, करूँ रन इसको। करते हैं। सो आई एम गेटिंग 201 क्रिएटेड, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, देख लेते हैं टेबल में क्या बोल रहा है, सच में हुआ कि धोखा दे दिया। क्रिएटेड यूज़र 1, दिस इज द एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, एक बार और भी कर लेते हैं, देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता है। इसी का आप और दे दो भाई। क्या हो गया? फॉरबिडन, फॉरबिडन। Let's see why it is giving forbidden. अजीब है, एक को चलने दिया दूसरे को चलने नहीं दिया, क्या है? देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। API v1 user auth, post mapping user auth user service response entity request body username. It should work. What happened? Why it is giving anything I'm doing wrong? Okay, user add is going fine, but when I'm trying to do the auth, sorry, it is giving forbidden. हेडर में कुछ प्रॉब्लम है, कुकीज में क्या है? No. API v1. Okay, let me take a look. Actually it is, so it is forbidden means it is not getting access, or it is not, मतलब उसको access ही नहीं दे रहा है। show may go wrong, any request authorized request permit all करके रखा है इधर। configuration config, it should work right, why it is not working? तो कुछ किया नहीं हमने। Let me take a look what is going on. PIP1 request module.
There is no exception also. What is going wrong? Let me take a look. अच्छा, इसमें एक बार देख लेते हो कि यूज़र OTP में फॉरबिडन है तो आना नहीं चाहिए. अरे, OTP is getting generated but it is giving me 403 request is wrong. तो शायद हमने कुछ गलत किया इधर, जो रिटर्न है उसमें कुछ गलत किया. रिस्पॉन्स एंटिटी HTTP स्टेटस ओके. ठीक है, अभी एक काम करते हैं इसको. ये ऑथ वाला है बट यू कैन सी राइट OTP इज गेटिंग जनरेटेड. ओके, ये रिस्पॉन्स में कुछ ये हो रहा है वो मैं देखता हूँ. बट OTP इज गेटिंग जनरेटेड एंड आई जस्ट ट्राई टू टेक ए लुक कि ये OTP के साथ ये मैच करता है कि नहीं. ओके, बट वी नीड टू फिक्स दैट, नहीं तो वो वाला नहीं तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है, so I'll just take this OTP user13347 and I will just call that 3347, right? And I will just call the OTP check. ठीक है, user1. So what is the body I'm getting? 2. तो मेरा 3 जो है चल रहा है. सेकेंड वाले में सिर्फ रिस्पॉन्स में कुछ इशू आ रहा है बट एक्चुअली इट्स फंक्शनलिटी इज वर्किंग. ओके, now let's take a look what's going wrong. In the meantime, if anyone can identify, just take a look क्या गलत हो सकते हैं जो हमने किया है. मैं एक काम करता हूँ, इसको डिबग में एक बार करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है. सर्वर इसको okay. Now what I'll do, I will do the user auth password 12345. Okay, then I'll call it the post method and let's see where I got the controller. Okay, show auth user, I got it in the service. ठीक है, देखते हैं. user repository dot user dot get name, right? It should give me the correct result. ठीक है, is present true है, so it will go user को लेके आएगा. if user password is matching, is it matching? Yes, it is matching. It is going inside send OTP. Send OTP किधर है? Send
ओके, सेंड OTP में 5167 OTP जनरेट हुआ. देन आई विल गो दैट OTP टेबल में कुछ है कि नहीं है. OTP टेबल में ऑलरेडी होगा तो इसके अंदर आया. यहाँ पे मेरा OTP को चेंज किया और OTP को परसिस्ट कर दिया. ओके, it is coming back here. Send OTP. Ah, it should not be if this. तो इसका else में होना चाहिए था, बट मैं गलत जगह पे थ्रो कर दिया. So it is username user not found and my 4403 आ गया. So what you need to do, you need to if यहाँ पे हमको else यूज करना है. ठीक है, let me run it and let's check what is happening. Okay, so let's do the thing. Add user से start करते. user add. I'll get another user. अभी serious मतलब एक Snehal has a user. I'm giving your name. Let's see. It's created, right? I can see in the table. Yes. सर इसको लोड करना पड़ेगा फिर से. Yes, Snehal has been created. Now what I'll do, I will do the user auth. Okay, done. 200. Okay, all running fine. User OTP run 3481. Then let me first user OTP check. Let me first give the wrong one. 1234. So it is give me false कि आपका OTP से match हुआ नहीं. But if I give the correct one, that is the 3481, right? You can give me the, oh sorry, good observation, true. ठीक है, all good. मैं ये कोड को git में कर देता हूँ so everyone can access. git commit. अब तो सेशन एंड कर दो क्या, मतलब पता नहीं सेशन कौन सा सेशन है. सेशन 5. ओके, commit. git push. आपके पास सारे कोड आ गया. You can go to my GitHub page, right? It will give you ये वाला नहीं, Spring Security Training.
you can see that auth server. ओके सो हमने आज सिर्फ ये पार्ट किया, कल हम अभी जो असली कॉम्प्लेक्सिटी है वो नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे. सो टुडे इट वाज अ लाइट सी थिंग. अभी जो भी जितना भी ना समझने वाला चीज़ है वो कल करेंगे, जहाँ पे हम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस हाँ ये वाला करेंगे, रिसोर्स ओटीपी. इसमें क्या करना है, फिल्टर यूज़ करना है, कैसे करना है. सो इट इज़ जस्ट लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंड द यूज़र दिस थिंग, राइट. ये वाला पहले सोच लेते हैं. ये वाला आई थिंक यू एवरीवन गॉट द गुड अंडरस्टैंडिंग कि क्या कर क्या रहा है, इसका स्कोप क्या है. फिर हम ये वाला कल देखते हैं. ओके अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है? एल्स इफ यू गाइज एग्री सो आई विल जस्ट कवर द CSRF. Else we can do it later also. It will take 5 minutes. Theoretical thing. बोलो बोलो कर देते हैं. 5 मिनट लगेगा और ठीक है. ओके एक इंसिडेंट हुआ था एक बार कि कोई एक बंदा है, कोई एक वेबसाइट यूज़ कर रहा है, ठीक है. उस वेबसाइट में मतलब एक समझ लो कि मेरा एक बैंक का वेबसाइट है और दूसरा है कोई गाना सुन रहा हूँ मैं, मतलब लैपटॉप में गाना सुनने का कोई वेबसाइट से गाना सुन रहा हूँ, राइट. एंड अचानक एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि नॉट ए बैंक, मतलब बैंक का कस्टमर वेबसाइट नहीं, दूसरा कोई वेबसाइट है. सो वहाँ पे अचानक बहुत सारे जंक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया. ओके सो व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब व्हाट्स रॉन्ग, राइट. सो द रॉन्ग थिंग इज क्या होता है, सपोज मेरा समझ लो एक ब्राउज़र है. ब्राउज़र में मैंने एक टैब ओपन किया. एक टैब में मेरा चल रहा है कुछ एक एप्लीकेशन जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ यूजिंग पोस्ट मेथड. टैब 2 में मेरा कुछ जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है. अभी जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन क्या किया, इसने देखा कि मेरा दूसरा टैब में क्या चल रहा है. इट कैन एक्सेस इट, राइट. इट कैन गेट द ऑल विंडो एंड कहीं से इसको पता चला कि आपका पास एक URL है जो समझ लो ऐसा है API v1 समथिंग URL1. आपका जो भी ऊपर टाइप है या जो भी है वहाँ से उसको मिल गया. उसने क्या किया, इसको लगातार पोस्ट मेथड को कॉल कर दिया लूप में, ठीक है. जो पीछे का सर्वर है उसने देखा कि हाँ सेम IP पोर्ट से ही तो आया है. सो IP पोर्ट सेशन ID सब सेम है, सेशन ID सब सेम है, राइट. तो एक्सेप्ट कर लिया उसने, गार्बेज फाइल में भर गया. प्रॉब्लम है. यस यस और नो. एंड सो इसको कैसे प्रिवेंट करते थे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट क्या करना पड़ेगा आइडियली. कैसे करता है स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे है तो वो भूल जाओ, बट एक्चुअली एक आइडिया जो दिया आई थिंक इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ आते हैं, बट व्हाट थिंग्स राइट शुड बी द राइट इम्प्लीमेंटेशन. तो बोलता है कोई भी मेथड, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पोस्ट करना है, कोई भी कुछ भी कर रहे हो उसके पहले आप एक बार गेट कर लो, ठीक है. क्योंकि गेट में आप क्या करते हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेजते नहीं हो, गेट में आप सिर्फ रिट्रीव करते हो इन्फॉर्मेशन, राइट. एंड गेट की टाइम
जब मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, आपको मैं एक सेशन, एक टोकन दूंगा, ठीक है. दिस टोकन विल बी, राइट, you can use this token during the post, ठीक है. ये जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन इस टोकन इसको नहीं मिल सकता है, ठीक है. So if you understand the JavaScript internally, so it can give the session ID, it can take a look the, it can get the URL, but it can't get the token, ठीक है. तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एक टोकन भेजना है जो आपका जो यूआई एप्लीकेशन उसका स्टेट मेंटेन करता है कि मैं ये टोकन भेजा है. तो मैंने गेट, सो बेसिकली सर्वर है, क्लाइंट है, हमने गेट कॉल किया, मैं आपको एक टोकन दिया, आप पोस्ट कर करो, उसी टोकन यूज़ करो, मैं वो टोकन को मैप करूँगा, चेक करके देखूंगा कि तुम्हारे सेशन आईडी के साथ तुम्हारा टोकन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफ मैचिंग इज हैपनिंग देन आई विल अलाउ यू, एल्स आई विल नॉट अलाउ यू. जितना भी पोस्ट कर लो मैं तुमको करूँगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं करूँगा. So that means it is to, this is called CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी. एक ही साइड में क्रॉस साइट से आप अगर रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे प्रिवेंट करोगे, ठीक है. So if you guys want, I can give a tomorrow I can just for the other side, मतलब just side panel में we can give a small demo of that how this CSRF happen and how you can prevent CSRF. if you guys interested, मैं इसको दिखा सकता हूँ एक छोटा सा एप्लीकेशन लेके कि कैसे होता है और स्प्रिंग कैसे करता है, स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट CSRF कैसे करता है, ओके. ठीक है, छोटा सा एप्लीकेशन लेकर दिखाएंगे CSRF, एंड देन वी विल गो विद दिस रिसोर्स OTP वाला, ओके. For your more information, please read any blog, anything, whatever internet you got CSRF. So tomorrow जब मैं CSRF करूँगा, it will help you to understand, okay, ये मैं कर रहा है तो it is getting prevented, right? Just get all the blogs, anything, just type CSRF, you will get lots of things, right? And I think probably the song website was the, like, I think song.pk. You heard this website कभी, मतलब अर्लियर कभी ये वेबसाइट का नाम सुने हो? And it was flagged, I think read by most of the browser and most of the things. वो फिर वो बहुत एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था, बट एक टाइम पे कुछ ऐसा काम करने के वजह से उसको, मतलब क्या बोलूँ, डिमीन किया गया था, एंड देन आफ्टर दैट पीपल स्टॉप यूजिंग दैट song.pk. Probably, I'm not sure, मैं कहीं पे सुना था, but it might be the viral news. But yeah, that's the story of CSRF. कल फिर मीट करते हैं, ओके फाइन.